The little owlet was quite happy under my bed. The following day, we found a second baby owlet in almost the same place on the veranda, and only then did we realize that where the rainwater pipe emerged through the roof, there was a rough sort of nest from which the birds had fallen. We took the second young owl to join the first and fed them both. Now, what happened when that owlet was sleeping under the bed? He was very happy under my bed taking rest. Usi din, the following day, the same day, we found a second owlet. One more owlet was there in the veranda, almost on the same place. And only then did we realize that there were the rainwater pipe emerged through the roof. There was a rough sort of nest from which the birds had fallen. And after seeing that owlet at the same place, then we came to know that the pipe which emerged, ठीक है, the pipe, rainwater pipe, जो पानी, बरसात का पानी का जो पाइप होता है, जो छत से नीचे आता है पानी, emerged through the roof. Emerge means come up. That come up from the roof, छत के ऊपर से जो नीचे आ रहा था, वहाँ पे there was a sort of nest from which the birds had fallen. वहाँ पे एक छोटा सा एक घोंसला था. It was a type of a nest, घोंसला, जहाँ से जो चिड़िया थी वो नीचे गिर रही थी. We took the second young owl to join the first and fed them both. Then what we did, my grandfather and I, we picked that second owlet and we took that owlet with the first one and we fed them both. और दोनों को हमने एक साथ मिलकर बिठाकर खाना खिलाया. When I went to bed, they were on the window ledge just inside the mosquito netting. And later in the night, their mother found them there. From outside, she crooned and gurgled for a long time, and in the morning, I found that she had left a mouse with its tail tucked through the mosquito net. Obviously, she put no great trust in me as a foster parent. Then what happened when I went to my bed? जब मैं सोने जा रहा था, चला गया बेड पे. But they were on the window ledge, just inside the mosquito netting. Window ledge means the extra part on the window. जो खिड़की के साथ में जो extra part होता है, that is known as window ledge. So वहाँ पे मैंने देखा, they were also inside that mosquito netting. Mosquito netting क्या होती है? मच्छरदानी जो हम लगाते हैं मच्छरों से अपने आप को बचाने के लिए, है ना? So वहाँ पे वो थे. And later in the night, their mother, और रात को, थोड़ी देर बाद रात को क्या हुआ, उनकी जो मदर थी, their mother found them there. उनकी मदर ने उनको ढूंढ लिया, that they were there, sitting on the window, sleeping there. From outside, she crooned and gurgled for a long time and in the morning. और वहीं दूर से ही, खिड़की के बाहर से ही, वो crooned and gurgled. These are the sound made by mother owl. ठीक है, मम्मी जो थी उनकी आउलेट्स की, ये आवाज़ें थी, वो उनको बुला रही थी, कोशिश कर रही थी उनको बुलाने की. And in the morning, और सुबह मैंने क्या देखा? When I got up, I found that she had left a mouse with its tail tucked through the mosquito net. सुबह मैंने उठ के देखा कि जो मदर थी, मदर आउल, उसने नेट के पास एक चूहे को, मरा हुआ चूहा, ठीक है, माउस, चूहे को उस नेट के अंदर टक कर दिया था, जिससे कि क्या मतलब हुआ इसका? What is the meaning of this? Doing this? कि वो अपने बच्चों को खाना दे रही थी. उसने अपने बच्चों को खाना दिया खाने के लिए, आउलेट्स को, ठीक है. Obviously, she put no great trust in me as a foster parent. Foster parent क्या होता है? A person who act as a parent means they are not real parents. मम्मी पापा रियल नहीं होते, लेकिन जो मम्मी पापा की तरह ध्यान रखते हैं, they are known as foster parents. So ऐसा लगता है जो मदर आउल ने किया, तो I think, ये पोएट, वो ऑथर कह रहे हैं, I think that उनको लग रहा था कि मैं उन बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं कर सकूंगा. That is why in the night she came and she kept that mouse tucked that mouse inside the net. Tucked means to push as to hide. किसी चीज़ को अंदर पुश करने के बाद उसको छुपा देना, टक करना. तो मॉस्किटो नेट के अंदर उन्होंने, मदर आउल ने उस रैट को, माउस को टक कर दिया था. सो इससे ये दिखाई देता है, ये पता चलता है कि मैं एज अ फॉस्टर पेरेंट इन बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता. मदर आउल को, शी वॉज वरीड अबाउट दैट, सो शी डिड दिस एक्शन.
The young birds thrived, and 10 days later at dawn, grandfather and I took them into the garden to release them. I had placed one on a branch of the mango tree and was bending to pick up the other one when I received quite a heavy blow on the back of my head. A second or two later, the mother owl swooped down on grandfather, but he was quite agile and ducked out of his way. The young birds thrived, and 10 days later at dawn. Thrive means to grow energetically. ग्रोथ पीरियड जो होता है, बढ़ना, बड़े होना, ठीक है, टू ग्रो एनर्जेटिकली फुल ऑफ एनर्जी से बड़े होना. सो अब उन बच्चों को हमारे घर में 9 डेज हो चुके थे, एंड 10 डेज लेटर एट डॉन, और 10 डेज के बाद मॉर्निंग में, डॉन इज द टाइम पीरियड ऑफ इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock व्हेन लिटिल लाइट एंड लिटिल डार्क इज देयर, व्हेन द मॉर्निंग स्टार्ट्स, ठीक है. तो ग्रैंडफादर एंड आई टुक देम इनसाइड इनटू द गार्डन टू रिलीज देम. तो हमने क्या किया डिसाइड कि दादाजी और मैं उनको गार्डन में लेकर आए आज़ाद करने के लिए, छोड़ने के लिए. रिलीज मीन्स छोड़ देना उनको जाने के लिए. 10 डेज के हो चुके थे वो, एंड दे वर वेरी एनर्जेटिक. आई हैड प्लेस्ड वन ऑन अ ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री. एक आउलेट को मैंने मैंगो ट्री के ऊपर रख दिया, ब्रांच के ऊपर बैठा दिया, एंड वॉज बेंडिंग टू पिक अप द अदर. और जैसे ही मैं नीचे झुक रहा था दूसरे वाले को उठाने के लिए, other when I received a quite a heavy blow on the back of my head. अचानक से मुझे एक पीछे सिर के ऊपर मेरे इतनी तेज एक आवाज़ आई, एक ब्लो आया, जैसे किसी ने मारा हो किसी ने पीछे से सिर के ऊपर. A second or two later, the mother owl swooped down on grandfather. और जब मैंने देखा, then what happened? Mother owl जो थी, वो उल्लू जो उनकी मदर थी, swooped down on grandfather. Swooped means the action of the bird coming with the height and getting down like this. Swoop means move swiftly. बड़े आराम से फ्लाइट लेना और नीचे आना. तो जो मदर आउल थी वो पेड़ के ऊपर से आई और वो नीचे ग्रैंडफादर के ऊपर आई. But he was quite agile and dug out of his way. But that mother owl was quite agile. Agile means graceful. Means not in a harmful manner, but in a very graceful manner. बड़ी swiftly तरीके से he came down and ducked out of his way, lowered the head or the body quickly, और वो उनके ऊपर से निकल गई. Quickly I placed the second owl under the mango tree. फटाफट से मैंने फिर क्या किया, what I did, quickly I took that second owlet and placed that also on the mango tree. Then from a safe distance we watched the mother fly down and led her young one into the long grass at the edge of the garden. Then what happened? From a safe distance we watched, then we shifted back. हम पीछे हो गए, अपने आप को हमने छुपा लिया, थोड़ी दूर कर लिया सेफ जगह पर, जिससे कि अगेन द मदर owl would not attack us. What mother did? She fly down and led her young one into the long grass at the edge of the garden. She took her baby and into the long grass at the edge of the garden के corner पे. We thought she would take her family away from our strange household, but next morning I found the 2 owlets perched on the hat stand in the veranda. And when I saw this, that she has taken that owlet, so I thought now she'll be taking and she'll not come back. So मुझे लगा कि वो चली गई लेकर. But what happened? The next morning what I found, that the 2 owlets perched on the hat stand in the veranda. Perched on the hat stand. Hat stand is a type of a stand. एक hat stand होता है जहाँ पे इस टाइप के stand होते हैं और इनके ऊपर hooks लगे होते हैं और हम अपने objects वगैरह इस पे carry करते हैं. कैप लगा देते हैं, umbrella टांग देते हैं, stands होते हैं, ठीक है. Those are known as hat stands. So veranda में एक hat stand रखा हुआ था. तो क्या देखा मैंने? 2 owlets perched on the hat stand in the veranda. The next morning when I woke up, then I saw that those 2 owlets, they were sitting on the hat stand kept in the veranda.